Hello friends, I'm Tausif Ahmed from Warangal. So nice to meet all of you from this wonderful group, and I do own a Honda CB350RS. So a couple of days ago I posted a photograph of my old Dominar in the Dominar 400 group, and I've actually received some hate in that group stating, few youngsters saying that how does it feel to ride the inferior bikes like Honda compared to Dominar 400. I too posted the pic of Dominar in that Dominar group because I had a lot of memories. As a machine, I really respect Dominar, but the people there, okay, some of them were good, others were hateful against me, prejudiced, right? So what I did, I just said, okay, the inferior Honda is much more reliable. Yeah, it's a long stroke engine, I know. It also gives a good mileage, right? In fact, I think from my experience, the Honda CB350 and Highness, right, both these Highness and RS, they actually deliver a great fuel economy, right? Okay, they are fuel efficient bikes, right? I usually get around 37 to 38 in city, and anytime on highway, I get around 40 plus, 42, 44, like that, okay? The average bar indicates 47 or 48, probably if you subtract those 4 to 5 kilometers, it's going to be somewhere around 43. So honestly speaking, those people are saying inferior bikes. I want to say that those are not inferior bikes, the Honda and Royal Enfield. Okay, he also spoke about Royal Enfield, but yeah, I don't think Royal Enfield is much better than Honda. But coming to the Honda people, see, there is a reason why I bought the Honda CB350RS. See, I've owned 4 Bajaj bikes, okay, not just 1 or 2, and I've also owned a Yamaha. So I'm saying these words from my experience, right? So back in the year 2009, I had a CBC. Before that, I used to have a Royal Enfield. Even still, I have a Royal Enfield, okay. So back in the year 2010, I got a Pulsar 180, right? Within 2 months, it started to have oil leak from the engine head, and it had a defective gearbox. I gave the bike multiple times to the showroom. They couldn't solve it, so I sold it away. In the year 2011, October, I got the Yamaha FZ, and I sold it in October 2014. I rode it for 3 years, and I can say Yamaha FZ was the bike which was the best among all the bikes which I've owned. Honestly, it never even had a minor vibration. Quality, paint, ride quality, everything was top notch except the fuel efficiency and power. Of course, it was around 155cc, I believe. It was a great bike. So in 2015, I bought a Bajaj Pulsar 200RS from Select Bajaj, Uppal, Hyderabad. So the bike was good, but within 2 years, its radiator's fan started to make some strange noise, and in the same year, it also started to have an issue of the leak from magneto cover. So that actually worsened my experience with Bajaj. So see, a person gets a bike. Back then Pulsar, NS 200 was around in 2015, around 99,000 from Select to Bajaj. Okay. So लेने के 2 साल में आपको radiator के fan में आवाज आना. I just did 70,000 kilometers. So it made a very strange noise. Okay, and like I said, it had. Despite so many attempts, the oil leak was still there from the magneto cover. I sold my Pulsar in 2020, NS 200 in 2020, bought a Dominar 400. But Dominar also had the issue of oil leakage from magneto cover. Despite so many attempts, again it was leaking and leaking. Were there any other problems with Dominar? No, it was really a good bike, but the new knots of Dominars, they actually had issues of engine blasting. If you type it on YouTube, Dominar 400 engine blast, you can say this, right? So I'm not willing to defame any brand. This is from my experience. Why did I come to Honda? वो मैं आपको बोल रहा हूँ. ये Dominar मैं भी own कर चुका हूँ, and trust me, 2017 and 18 models of Dominar were the best. Okay, others I don't think they are reliable at all, because आप YouTube पर जाकर चेक करना, 2021, 22 के भी Dominars को इंजन हेड्स में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. Okay, the company is replacing them for free of cost, but यार एक नई गाड़ी जब आप लेते हो, would you like to get its head replaced within 13 to 14,000 kilometers? There are so many plethora of user interviews right on YouTube, जिसमें आप देख सकते हैं कि Dominar में कितने problems हैं. ABS unit failure. So despite having so many problems, people are still buying it. Okay, let them buy. I don't think I can interfere in their decisions. But comparing it with Honda, अब मैं Honda का क्यों आया? I'll tell you. जब भी मैं मेरी डोमिनार को एक 500-600 किलोमीटर राइड करने के लिए सोचता था, आई वॉज वेरी अफ्रेड, बिकॉज मेरे को कुछ ना कुछ लगता था कि ये बाइक का सेल्फ स्विच काम नहीं करेगा,
या फिर रेडिएटर में से। वो पल्सर का 200 NS का एक्सपीरियंस इस पर असर दिखा रहा था कि आई वॉज अफ्रेड, अनरिलायबल, राइट। वो डर रहता है ना आपको, कभी कभार एक बाइक से प्रॉब्लम हो गया तो वो डर आपके पास रह जाता है कि अरे ये ब्रांड ही नहीं लेना है। सो सिंपली व्हाट आई डिड, आई सोल्ड अवे माय डोमिनार। इट वाज अ गुड बाइक, नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, बट NS 200 का जो बैड एक्सपीरियंस था वो डोमिनार पर असर करा। एंड आई फाइनली बॉट अ Honda CB350RS and I must say it's an amazing bike, people. Okay, and yeah, it's a long stroke bike, it's lethargic, I do agree, because it's only 21 bhp, right, 20.7 है logically. So उसके साथ साथ अगर लेथार्जिक रही, डल रही, तो इट्स डिलीवरिंग अ गुड फ्यूल, राइट, इकोनॉमी, राइट, मतलब माइलेज आपको ज़्यादा आ रहा है बाइक का, समवेयर अराउंड 38 फॉर अ 350cc बाइक इज वेरी गुड। उसके साथ साथ अब एज द इंजन ऑफ दिस बाइक इज एयर कूल्ड, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा आधी रात। आई मीन व्हेन आई हैड NS 200 और डोमिनार, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक, अरे यार, व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दैट रेडिएटर फैन मेक्स सम स्ट्रेंज साउंड। अरे यार, फैन अगर रेडिएटर का खराब हो गया, इमेजिन दैट इफ यू आर ऑन अ लॉन्ग राइड, रेडिएटर का फैन हाथ दे दिया, क्या करोगे आप? आपको बजाज का सर्विस सेंटर हर जगह नहीं रहेगा। रेडिएटर्स विल ऑलवेज नॉट बी इन स्टॉक, रेडिएटर फैंस विल नॉट बी ऑलवेज इन स्टॉक, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई केम टुवर्ड्स Honda. एक्चुअली मैं यामाहा में R3 के लिए देख रहा था, बट इट वाजंट देयर, एंड आई आल्सो वांटेड अ बाइक विद सम decent riding posture, not aggressive. So despite R3 being friendly, it was not there in India. Ninja was like quite out of my budget, 4 लाख के ऊपर जा रही थी, तो I was looking somewhere around 3 lakhs. So अब Honda मैं 1 साल से चला रहा हूँ, इंटरेस्ट में, I've done more than 5,000 kilometers and it's personally reliable in every way, in road grip, braking. हाँ, रस्टिंग का एक थोड़ा इश्यू आया था, बट लास्ट सर्विस को वारंगल बिग विंग सेंट्रल वालों ने वो एरियाज को पूरे मेरे को घसकर पेंट करके दे दिया, एंड दे एश्योर्ड दैट जब भी आपको इश्यू होगा, सर प्लीज लेट अस नो, वी विल पेंट इट बैक। सो दैट्स एटलीस्ट अ गुड रिस्पांस फ्रॉम अ कंपनी, एंड आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद द Honda. सो मतलब ये है कि जो लोग ये Honda हाइनेस या RS को इंफीरियर बोलते हैं, ये लोग बजाज डोमिनार जो चलाते हैं, इन लोग को मालूम है कि ये नए डोमिनार्स में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। आप एक बार YouTube पर चेक करना, डोमिनार इंजन ब्लास्ट। अरे यार, आप एक 2,50,000 डालकर एक नई बाइक ले रहे हो, चलो 2 लाख 2020-19 के तो लाइक दे वर समवेयर अराउंड 2.2 लाख आई थिंक। अगर आप 2,20,000 में डालकर ले रहे हो, आप अगर बाइक चला रहे हो, चलते चलते आपकी बाइक का इंजन ही फूट गया, क्रैंकशाफ्ट पूरा दिख रहा है, पूरा कूलेंट गिर गया, तो हाउ विल यू फील यार, राइट। ये कुछ KTMs के साथ भी हुआ है, राइट। सो आई मीन डोमिनार इंजन इज अ डेरिवेटिव ऑफ KTM, राइट। सो उसमें भी आए हैं, आप यूट्यूब पर चेक करना, राइट। सो मेरा बोलने का मतलब ये है, दोज हु राइड दी बाइक्स विच आर अ बिट मोर अनरिलायबल, दे आर कमेंटिंग ऑन Honda दैट इंफीरियर बाइक्स बोलकर। सो मुझे सिर्फ ये बोलना था कि एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। आई ओन 4 बाइक्स फ्रॉम बजाज, मैंने प्लैटिना भी ओन किया था 2021 में, लिए 1000 किलोमीटर में, उसको भी हेड में से ऑयल ली, इंजन में पूरा रस्टिंग। आई थॉट क्या बकवास मेक है ये बाइक्स का। आई डोंट नो व्हाई बजाज डजंट वर्क ऑन ऑयल लीक्स यार। इतने डोमिनार से मैं हर डोमिनार से पूछता हूँ, देखता हूँ तो कच्चा होता है लेफ्ट साइड, राइट। मतलब वो रबर में से मतलब ऑयल लीक नहीं है, पूरा फॉर्म होता है, दैट लुक्स ऑड, राइट। वो Honda के बाइक्स में अक्सर नहीं होता है, राइट। सो या दैट इज हाउ इट इज, ओके। सो Honda, आई डेफिनेटली थिंक इट्स मच मोर रिलायबल देन बजाज, राइट। या द स्पेयर्स आर अ बिट एक्सपेंसिव, बट ऑन द होल इट इज मच मोर रिलायबल। सो या यही फीडबैक मेरा शेयर करना था कि जो लोग बोलते हैं कि आपके बाइक्स इंफीरियर है, ये है, फालतू है, जस्ट उनको बोलना कि आपके कंपनीज की हिस्ट्री एक बार चेक करो, राइट। कई बार बाइक्स बनाते हैं, तो डोमिनार 250 ओनर्स में, अब आई एम अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स, मैं हमेशा देखता हूँ कुछ ना कुछ इश्यू डालते रहते हैं ओनर्स। हाँ, देयर आर फ्यू राइडर्स हु हैव कवर्ड 1 लाख किलोमीटर्स ऑन डोमिनार, आई अप्रिशिएट, बट दोज वर ओल्डर डोमिनार्स। नए डोमिनार्स में देयर आर प्रॉब्लम्स, एंड कंपेयरिंग, जब बात ब्रांड प्रेफरेंस की आती है, आई एम पर्सनली वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट Honda कि you can ride it to any place. If I'm planning a ride to Vizag or like केरला, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, आई एम डैम श्योर कि Honda वो काम करके दिखाएगी। डोमिनार, अगर मेरी पुरानी डोमिनार रहती थी तो आई मस्ट हैव मुझे सोचने लगाती हूँ बाइक। सो दिस इज हाउ इट इज, ओके। रिलायबिलिटी का एक भरोसा होता है जो बहुत कम ब्रांड्स आपका दिल जीत पाते हैं, दैट इज Honda एंड Yamaha भी, आई कैन ऑल्सो कंसिडर दैट, राइट, एंड इवन Kawasaki, राइट। आई एम नॉट सेइंग इंडियन ब्रांड्स आर बैड, बट कुछ चीज़ें होती है ब्रांड्स के साथ जो आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी डाल देती हैं, वो नेगेटिविटी को निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट।
जो मैंने बजाज के नए डोमिनार्स के साथ देखा है। मेरा प्लान एक्चुअली डोमिनार ही लेने का था, नई वाली, बट वो इंजन फटना एंड अक्सर ओनर जो हेड के बारे में रिप्लेसमेंट करा रहे थे, ओके, इवन इफ द कंपनी रिप्लेसेस इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, it's never going to win my trust. So good luck Honda owners, okay, God bless you, ride safe and take care.